Hello everybody, welcome back to Chasing the Target. Afghanistan 7 विकेट से जीत गए and they keep their playoff semi-final hopes alive. क्या बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे. This is their best World Cup so far. I think the first one 2015 में था, फिर 19 में खेल रहे. अब जो 2023 में क्रिकेट खेल रहे अफगानिस्तान, it's top quality. They are ahead of Pakistan right now. दो उनके मुश्किल गेम है, in the last two games ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन their hopes are still alive. उनके कैप्टन भाई जो खेल रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. पहले तो उनकी फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस टॉप क्लास है, उसके बाद जो बैटिंग कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फिनिशिंग ऑफ गेम्स फॉर हिज टीम. बेहतरीन बैटिंग फ्रॉम हसरतुल्लाह शाहिदी, जबरदस्त खेल रहा, उन्हें क्या फॉर्म में है. और आज जो बॉलिंग नबी करा भाई, मिस्टर प्रेसिडेंट, इफ राशिद डजंट गेट यू मुजीब डजंट नूर विल, इफ नूर डजंट नबी विल, ऐसा चल रहा है. उनकी स्पिन अटैक तो अनबिलीवेबल है. एंड yeah, Netherlands struggled today against a top Afghanistan team. अभी देखना पड़ेगा इनके आखिरी दो मैच में क्या रहेगा. बट लाइक अगर देयर इज टर्न, देयर इज स्पिन, इन लोग ऑस्ट्रेलिया को भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, इन लोग साउथ अफ्रीका को भी प्रॉब्लम दे सकते हैं. स्पेशली साउथ अफ्रीका ऑलरेडी नेदरलैंड से हार चुके हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हार सकते हैं, तो उनके चांसेस है अभी अफगानिस्तान के. द नेट रन रेट आई डोंट थिंक इज बेटर देन पाकिस्तान, बट दे हैव मोर पॉइंट्स, मोर विंस. एंड अगर उन लोग दो मैच जीत के, तो उन लोग भी भाई आ जाएंगे सेमीफाइनल में. तो हाँ, बेहतरीन परफॉर्मेंस ओवरऑल. आई थिंक नेदरलैंड्स जो शुरुआत कर रहे थे, स्पेशली पावर प्ले में बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे. दे गॉट ऑफ टू अ फ्लायर, लेकिन फिर राशिद खान आए टीम मीटिंग में. आई थिंक ही वेंट फॉर अ ब्रेक, केम आउट, एंड जो टीम मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ, दैट वर्कड. आई डोंट नो व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज वेरी एनिमेटेड, लेकिन जो बॉलिंग और फील्डिंग हुआ उसके बाद टॉप क्वालिटी फ्रॉम अफगानिस्तान. दे कुड हैव रैप्ड थिंग्स फॉर 140 150 आल्सो, मगर 180 टारगेट था नेदरलैंड्स के लिए, एंड फॉर अफगानिस्तान, सॉरी, एंड इट प्रूव्ड टू बी टू इजी, एंड देयर नेट रन रेट has been boosted also. And yeah, Mohammad Nabi rightfully man of the match. अगर आप देखें figures उसके 9.3 overs 28 runs 3 विकेट. नूर अहमद भाई 9 overs 31 2. ये इन्हें राशिद खान का कॉपी है, लेफ्ट हैंडेड. आज उन लोग बताए भी, लाइक मिरर इमेज है पूरा. इफ यू सी हिज एक्शन इज द सेम, एंड लाइक इट्स लाइक क्विक आर्म एंड स्टफ, एंड फॉर टू पिक अ लेफ्ट हैंडर इज इवन हार्डर. दिस गाय इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. जो नूर अहमद है, मेरे हिसाब से मतलब बेहतरीन प्लेयर है ये, एंड मोर टू कम फ्रॉम हिम. आई थिंक एक्सीलेंट क्रिकेटर. he will be one for the future, and I'm sure IPL में, अभी तो गुजरात में है, but he'll go for big bucks whenever there's a big auction. बेहतरीन बॉलर है भाई नूर अहमद, तो उसको पिक करना बहुत मुश्किल है. पाकिस्तान also स्ट्रगल करे, आज नेदरलैंड्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे. And yeah, Rashid Khan didn't pick up any wickets, but very good economy of 3.1, 3.2, and overall everyone did their bit. And then from the batting wise, तो थोड़े से दो जल्दी विकेट से, मगर रहमत शाह 50, शायद 50, देन अजमतुल्लाह उमर साहिब, वो भी बेहतरीन ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छा करता, बैटिंग भी उसकी लाइक सॉलिड है, हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहा अजमत, like along with Shahidi. Him and Shahidi have been I think the two main guys, the pillars in that middle order. अगर गुरबाज नहीं रन्स मारा तो इन लोग आके रन्स मारते हैं, एंड सपोर्ट दे रहे हैं. पहले अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यही था कि कोलैप्स हो जाते थे, बैटिंग में इशू होता था, उन लोगों को मसला हो जाता था, दे वुडंट बी एबल टू कन्वर्ट इनटू बिग स्कोर्स. लेकिन अभी जो मिडिल ऑर्डर आ गया शाहिदी और अजमत का एंड रहमत शाह, ये तीन जो बैटर्स है, they've contributed so well in this World Cup, and they've improved their batting by leaps and bounds. So overall, yeah, Afghanistan in a very good position right now. Yeah, उनके दो टफ मैच है, लेकिन भाई ये टीम को काउंटर नको करो, उन लोग बहुत dangerous रह सकती है on their day. They can cause problems even for Australia and South Africa. They are tough games, but never say never for Afghanistan. And this last 10 days, 2 weeks before the semi-finals is going to be very interesting because Afghanistan is in contention, Pakistan is still in contention, Australia of course is in contention, so there is a lot to play for in these last few days before the semi-finals.
to go. Tomorrow we have Pakistan versus New Zealand. वो भी जबरदस्त मैच है इनका, सुबह में है 10:30 इंडिया टाइम से. बेंगलोर में मैच है वो, पाकिस्तान को जीतना जरूरी है. वो नीदरलैंड न्यूजीलैंड सॉरी, इंजरीज काफी है न्यूजीलैंड को. अगर आप देखें, अब फर्गसन का अपडेट नहीं, खेलेगा नहीं खेलेगा आई एम नॉट श्योर, लेकिन एनरी तो नहीं है. देव गॉटन काइल जेमिसन, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. एंड yeah, overall they are having problems, New Zealand, in terms of injuries. So Pakistan do have a chance. अभी उन लोग आ रहे हैं थोड़े रिदम में. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंप्रूव परफॉर्मेंस था, फिर बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस था. फखर जमान गॉट रन्स अंडर हिज बेल्ट. आई थिंक दैट इज ह्यूज. एंड अगर बैटिंग विकेट मिल गया चिन्नस्वामी में, वो बहुत डेंजरस खिलाड़ी रहेगा कल. फखर जमान अब वही है, पाकिस्तान के हिसाब से उनके स्पिनर कैसा डालेंगे, दैट हैज बीन द स्ट्रगल फॉर देम इन द मिडिल ओवर्स. आप देखो अफगानिस्तान आज जो बॉलिंग करे भाई मिडिल ओवर्स में, द स्पिनर्स मतलब अटका दिए नेदरलैंड्स को. नो रूम टू ब्रीथ, पैर रख दिया यहाँ पे. दे सेड कि भाई वी गोना चोक यू अंटिल यू कोलैप्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. एंड दैट्स व्हाई अफगानिस्तान इज वेरी डेंजरस. उनके स्पिनर्स लाजवाब है, एंड जो क्रिएट करते हैं प्रेशर, मुश्किल हो जाता है ऑपोजिशन के लिए. आज आप देखें राशिद विकेट नहीं लिया, मगर जो उन्हें कॉन्स्टेंटली बीटिंग द बैट, 2 रन 3 रन ओवर में दे रहा, इट allowed Nabi to come and pick up like 3-4 wickets, 3 wickets from the other end. तो वैसा है अफगानिस्तान की टीम. 2-3 रन आउट भी करे आज. फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी अफगानिस्तान की, तो वो भी तारीफ करना पड़ेगा. I felt they fielded really really well, and overall it was a very very good performance. Netherlands will be disappointed with today, but overall they've also fought a lot. ये वर्ल्ड कप में Netherlands अच्छी फाइट दी है. Like they a couple of big wins for them. They won't forget the South Africa win, and even against Bangladesh. So yeah, it's a good tournament for them, learning. अब देखो अफगानिस्तान का तीसरा वर्ल्ड कप है, नेदरलैंड्स का पहला होगा या आफ्टर लॉन्ग टाइम पहला होगा, तो उन लोग भी सीखेंगे. ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दे विल इम्प्रूव. काफी अच्छे टैलेंट है उनका. जो कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स आज फंस गया उन्हें विद अगेंस्ट द स्पिन, लेकिन ओवरऑल उन्हें अच्छा प्लेयर है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है उन्हें. आई वोंट बी सरप्राइज इफ अ लॉट ऑफ टीम्स इन फ्रैंचाइज लीग्स पिक हिम अप इन देयर टीम्स, एंड ही हैज अ गुड शोल्डर ऑन हिम. कैप्टन भी बहुत अच्छा है वो. तो काफी पॉजिटिव्स है नेदरलैंड्स के हिसाब से. लेकिन अभी इट्स ऑल अबाउट अफगानिस्तान. दे आर राइट नाउ ऑन क्लाउड 9. If you told them they'll win these many games in this World Cup, they would have been really happy. But I don't think they're stopping now. Hazmatullah also said कि भाई post match में कि हमको semi-final भी पहुंचना है. Gonna try our best. We're gonna play as good cricket as we can, and they have the talent. The talent is always there. मगर अब mindset भी आ रहा है. आप देखें, I think ये जो captain है हजमतुल्लाह बहुत mature है, relaxed भी है उन्हें. He's not as hyped up, and he's making proper decisions under pressure. उन्हें अच्छे decisions ले रहा है, और बैट के साथ भी उन्हें responsibility ले रहा है. सब आउट होने दो, मैं ठहरूंगा एंड तक, and I'm going to play a match winning captain's innings, take the responsibility on my shoulders, and that has been very impressive. अगर आप देखें ये वर्ल्ड कप में from हजमतुल्लाह, बहुत जबरदस्त कर रहा है. Now experienced players are also putting their hand up, like Mohammad Nabi, and yeah, like I said, the batting order has done very well. मगर कल का मैच और एक भी है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, तो उसके बारे में भी कल बात करेंगे. लाइक उसमें आई थिंक मिचेल मार्श नहीं है, आपके मैक्सवेल भी नहीं है. मैक्सवेल फेल ऑफ अ गोल्फ कार्ट. सो मेनी इंजरीज इन क्रिकेट ड्यू टू गोल्फ, मैन. आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, मगर जो भी गोल्फ खेलता पता नहीं टांग तोड़ दे रहा है, ये कर दे रहा, वो कर रहा है. मैक्सवेल का तो दिस इज लाइक द थर्ड टाइम. कभी उन्हें स्विमिंग पूल में टांग तोड़ देता, कभी गोल्फ में. इज इंजरी प्रोन आउटसाइड द फील्ड. आई डोंट नो क्या करते रहता उन्हें, लेकिन एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया डू हैव बैकअप्स. आपके पास कैमरन ग्रीन है, आपके पास मार्कस स्टोइनिस भी है, तो आपके पास ऑप्शंस है. एंड दे स्टिल वेरी गुड क्रिकेटर्स, एंड आई एम श्योर दे विल प्ले वेल अगेंस्ट इंग्लैंड. मगर इंग्लैंड को भी भाई दे नीड टू स्टार्ट विनिंग, मैन. इतना टैलेंट रख के आप हर मैच नहीं हार सकते. आई एम सॉरी, लाइक आई मीन हार रहे ठीक है, लेकिन इट इज शॉकिंग दैट उन लोग हार रहे हैं. सो दे हैव टू कम बैक स्ट्रांग, एंड at least put on a show in these last couple of games. You have Butler, Ben Stokes, आपके Livingstone, Sam Curran, Moeen Ali, Johnny Bairstow, जो रूट, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियां अगर मैच नहीं जीतने वाले तो कौन जीतेगा भाई. इतना टैलेंट रख के तो आप हर मैच हार जाएंगे, तो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. इट्स ऑलरेडी अ बिग प्रॉब्लम, बट इट विल बी वेरी अपसेटिंग आई थिंक फ्रॉम इंग्लैंड फैंस पॉइंट ऑफ व्यू. So let's see अगर इंग्लैंड कल फाइट करे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. ऑस्ट्रेलिया, like I said, they have 2 injuries. Mitchell Marsh won't be playing, Maxwell won't be playing. The Marcus Stoinis is back. वो तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा कैसा चलेगा ऑस्ट्रेलिया का हिसाब. जैम्पा बहुत अच्छे फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा उन्हें. He's been that wicket taker for them. Lone spinner है, ठीक है. And also with no Maxwell there, that could be an issue for them because he provides that off spin. But Zampa has been leading from the front as 2 गेम के बाद वो जो बॉलिंग कर रहा बेहतरीन कर रहा. वार्नर भी फॉर्म में आ गया. आई थिंक स्टीवन स्मिथ का फॉर्म ये थोड़ा सा वरी है. बड़ा खिलाड़ी है वो. ही इज प्लेड इन पिचेस एंड ग्राउंड्स अराउंड द वर्ल्ड. ही हैज अ ग्रेट टेस्ट रिकॉर्ड, मगर आई थिंक वनडे फॉर्मेट में
he has to still prove himself and step up for Australia, because इतना बड़ा प्लेयर है, स्पेशली ये पिचेस पे उन्हें अच्छा है प्लेयर स्पिन का, टफ कंडीशंस में उन्हें 50s 100s मार सकता है, हम देख चुके हैं, तो उसको आके परफॉर्म करना बहुत जरूरी है स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। बट ओवरऑल उनकी टीम अच्छी फॉर्म में दिख रही है। यस, मैक्सवेल एंड Mitchell Marsh are big losses, but they should hopefully be back for them if they do make it to the semis. Two big games now for Australia, and let's see what happens. I think they're playing Afghanistan, and then they have one more game. Can't remember if it's against Sri Lanka. Maybe New Zealand is playing Sri Lanka. I'm not sure who Australia is playing, but they do have one more game, I think. तो इंटरेस्टिंग रहेगा वो। बट या एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और कंटेंट लेके आएंगे आपको। इंडिया साउथ अफ्रीका की भी मैच है संडे कलकत्ता, दैट शुड बी अ लॉट ऑफ फन, दैट विल बी अ नेल बाइटिंग एनकाउंटर कलकत्ता में। द इंडियन टीम पहुंच गई उधर अभी, दे रीच्ड कोलकाता आफ्टर यस्टरडेज विन। भाई जो खेल रहे, जो बॉलिंग अटैक इंडिया की अभी तो नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड क्लास है, सो दे विल बी पम्प्ड एंड रेयरिंग टू गो इन दैट गेम, एंड दे आर अप अगेंस्ट द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन दिस टूर्नामेंट मेरे हिसाब से। साउथ अफ्रीका जो है तो वो बहुत अच्छा मैच होगा होपफुली। आई मीन द वे इंडिया आर प्लेइंग, दे आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एवरी टीम, तो साउथ अफ्रीका विल हैव टू बी अप फॉर द चैलेंज। लेकिन होपफुली अच्छा मैच होना चाहिए, कांटे का मुकाबला, टक्कर का मुकाबला। होपफुली लास्ट फ्यू बॉल्स तक गए वो मैच, तो फिर मजा आएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का। ईडन गार्डन्स तो पैक्ड का हिस्टोरिक आइकॉनिक ग्राउंड है वो, सो होपफुली वी गेट टू सी सम फन। कल भी मैं जैसा बोला, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का भी मैच बहुत इंपॉर्टेंट है for Pakistan to stay alive, and also for New Zealand, because अगर न्यूजीलैंड ये हार गई, then they have one more game श्रीलंका के खिलाफ, वो भी हार गए तो उन लोग आउट हो जाएंगे, तो उन लोगों को भी जीतना बहुत जरूरी है कल, गेट मोमेंटम बैक आफ्टर 2 losses in a row। इंजरीज भी बहुत है, so they'll be looking to fight। I mean न्यूजीलैंड in the past also when they do lose players, उन लोग आते हैं वापस। विलियमसन का भी कोई अपडेट नहीं है शायद अभी, that's a बड़ा loss for them, big gap, big absence, and then if you add all the other injury problems, it is a big issue for New Zealand, so उनको भी जीतना जरूरी है कल। पाकिस्तान अभी थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहे हैं, जैसा मुबला फखर जमान भी, द वे ही बैट इन द लास्ट गेम। अब देखना पड़ेगा, उसामा मीरी शायद खेलेगा अगर शादाब इज not recovered from that concussion, and the fast bowlers, I think Shaheen is also getting into form। वसीम जूनियर बेहतरीन बॉलिंग कर रहा, तो उसको भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कल। शुड बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम इन बैंगलोर। सुबह का गेम है, डे मैच है वो, मगर मजा आना चाहिए भाई वो गेम में। आई थिंक दो टीम्स, अभी न्यूजीलैंड भी अनप्रिडिक्टेबल हो गई विद ऑल दीज इंजरीज एंड द लास्ट कपल ऑफ परफॉर्मेंसेस, सो देखना पड़ेगा हम लोग कैसा टैकल करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, स्पिनर का भी हिसाब लगाना पड़ेगा। आई थिंक सैंटनर इज अ वेरी गुड स्पिनर। पाकिस्तान आल्सो दे नीड उसामा मीर एंड इफ इट्स सलमान आगा, और आई डोंट थिंक नवाज गोना प्ले, मगर जो भी खेल रहा उनको विकेट्स लेना पड़ेगा, प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में। बैंगलोर में इफ इट्स टाइप ए सर्विस तो मे बी 400 रन लगेंगे, अगर इफ इट्स टाइप बी सर्विस थोड़ा सा स्लो जैसा इंग्लैंड श्रीलंका का देखे, तो फिर वहां पे बॉलर्स को, स्पिनर्स को चांसेस मिल सकते हैं। जस्ट बिकॉज द स्मॉल ग्राउंड डजंट मीन इट्स गोना बी हाई स्कोरिंग, इट डिपेंड्स ऑन द पिच आल्सो। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मैच था वो अलग पिच था, और ये जो इंग्लैंड श्रीलंका का था वो अलग पिच था। तो अब कल का पिच क्या रहेगा मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन वही देखना पड़ेगा कि इफ इट्स अ गुड बैटिंग विकेट, फिर 400 भी ऑन है। आप देखे भी वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान गेम में, सो इट शुड बी अ लॉट ऑफ फन, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम। अभी वर्ल्ड कप थोड़ा खुल रहा, देयर इज अफगानिस्तान इज अलाइव there also, if they win the last 2 games, उनको बहुत अच्छा चांस है आने का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। that will be huge achievement for them, of course। दो बड़े गेम है उनके लिए, लेकिन never say never in cricket, they have a talented team, the captain is doing really well, मैच्योरिटी के साथ खेल रहे, एग्रेसिव अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखना पड़ेगा उनका क्या हिसाब किताब रहेगा। बट आई थिंक दैट प्रीटी मच रैप्स इट अप। कल डबल हेडर है, तो थोड़ा सा तैयारी करेंगे उसका। कल बैंगलोर में भी मैच है, फिर अहमदाबाद में आई थिंक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, वो भी तगड़ा मैच होगा होपफुली। पेपर में तो तगड़ा है, आई डोंट नो फॉर्म के हिसाब से तो तगड़ा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड दिख रही, लेकिन इंग्लैंड इफ दे जस्ट शो अप, एटलीस्ट 3-4 प्लेयर्स शो अप एंड परफॉर्म, देन दे हैव अ गुड चांस इन दिस गेम। बिकॉज हम लोग कितने बार देखे भाई ये इंग्लैंड टीम को इन द पास्ट, they can wipe teams to the floor, but now they're getting wiped। पूरा उल्टा हो गया, लेकिन स्टिल देयर इज टैलेंट। मैं बोल रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले एटलीस्ट वी नीड टू सी अ विन अंडर देयर बेल्ट, अनदर विन अंडर देयर बेल्ट, बिकॉज ऑफ द क्लास टैलेंट दैट दे हैव, एंड yeah, it's going to be hard for them to get up for this game, especially they're playing of course they're playing the rivals and all that, लेकिन the rivals are like fighting for a semi spot, और इन लोग तो भाई घर के लिए वेट कर रहे हैं। इब्राहिम भाई, लॉन्ग टाइम मैन, वेयर हैव यू बीन? मिसिंग इफ पांड्या returns to does Thakur come into the 11? I don't see him coming to the 11. This is a very good question, but I don't see Thakur coming into the 11. This bowling attack, how are you going to rip that apart? That's the problem. And yes, India's batting does look light, but they're saving 30-40 runs in every game.
right? Yes, Shami is coming when the six down. He's coming into bat, which is light, but he's picking up 5 wickets every game. He's running through teams. How do you drop Shami? How do you drop Siraj? How do you drop Bumrah? It's very difficult, man. Like I don't know, the team management might be considering this in particular. If they have to, they might make a decision. But if they do make that decision to fit in Hardik Pandya, और वो डिसीजन साउथ गया तो भाई लग जाएंगे. इट इज अ रिस्क दैट दे हैव टू टेक, बिकॉज अगर आप ये कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई मीन ऑनेस्टली दे आर विनिंग आल्सो व्हेन शार्दुल एंड पांड्या आर प्लेइंग. लेकिन जो शमी परफॉर्मेंसेस दे रहा, कल सिराज भी, yeah, ये जो trio bowling attack, teams are fearing this. Now, if you bring in Thakur, there is a place where teams will look to attack. I'm not saying Thakur is not a good bowler or anything like that, but the level of these three is like really high. उनका जो सीलिंग है, it's very high. विकेट टेकिंग है, एग्रेसिव है, अटैकिंग बॉलर्स है. उन लोगों को ये तोड़ना, ये तिग्गी को मेरे लिए लाइक आई थिंक बहुत नाइंसाफी रहेंगी मेरे हिसाब से. So Ibrahim, I don't know if they're gonna Thakur comes back into the 11. I really don't know what's gonna happen. And Pandya का भी खबर नहीं मालूम आगी है उन्हें आएगा नहीं आएगा. He's missing the next game also in Calcutta. Will he play in Netherlands? They're saying maybe, but that also I'm not sure. And then you have the semi-final in either Mumbai or Calcutta as well. So I don't know what's going to happen. But right now, if Pandya doesn't come in, then you play this 11. If he comes in, then I don't know. You might have to drop a batsman. Also, they're saying उन लोग horses for courses भी खेलने वाले हैं. तो अगर ball turn हो रहा है and everything, अब अश्विन आएगा तो they'll have to make the same decision then, right? किसी को drop करना पड़ेगा ना. How do you break these three? People were saying कि सिराज को drop करो, मगर सिराज showed yesterday, bro. He's an incredible bowler. Crossing with the new ball, getting to seam, everything. He's bowling so well. He had a few games where he didn't pick up wickets, but that doesn't mean he was bowling bad. If it's direct for semi-final, I would only bring Pandya in. Yeah, but even that would be risky. Like, if Pandya is directly comes in for semi-final, what is his fitness level? What is it? Because he is injury prone too. So I'm not sure exactly kaisa karenge wo. It'll be very difficult in my opinion. Even if Pandya comes in, who are you going to drop? You might have to drop Surya Kumar Yadav. So yeah, I'm not exactly sure. Rashid not getting wickets, teams trying to attack different bowlers and losing wickets to them. Yes, exactly. That is a very good point, Punter. Thank you for joining. And यही है कि अगर आप देखो आज के मैच में Rashid tied one end up. He was beating the bat consistently. He was bowling googlies. He got a couple of close LBW calls. एक तो umpire उठा दिया था हाथ, and then they reversed the decision on DRS. So he didn't get a wicket, but he bowled such tight lines and lengths, and getting the ball to return, it created pressure. Nabi came in from the other end and picked up 3 wickets. So वैसा है, the bowling in pairs, the bowling as a team, the putting pressure, applying pressure on the opposition, keeping it extremely tight and accurate, and that becomes thing. And we saw that IPL में भी देखते राशिद को 5 in over 4 in over खेलते, and then दूसरे players को attack करते, but then it produces wickets for other bowlers. Exactly what I'm telling you, Noor Ahmed, this guy he might even surpass Rashid, because it's the same action. You can't read him. He's very quick, and he's left-handed. It becomes even tougher to pick, especially for the right-handers. This guy is outstanding talent. 18-19 का मैं बोल रहा हूँ, और आगे जाएंगे. Rashid is my favorite bowler, but Noor Ahmed, man, watch out for this guy. It's identical actions. It's mirror image, splitting image, and because he's a Chinaman bowler, left arm leg break, he will be even more dangerous and difficult to pick. We already know that left arm leg break bowlers, Chinamen we call them, are very difficult to read. Or इन्हें तो भाई, because of his arm speed, like it's so quick that it becomes और मुश्किल पिक करने के लिए. तो ये इन्हें नूर अहमद जो है भाई, उसको देखकर उन लोग छुपा के रख रहे हैं अभी उसको, बिकॉज 18-19 साल का है, छोटा है उन्हें, उसको सिलेक्टेड गेम्स में खिला रहे. लेकिन भाई इन्हें भी खतरनाक बॉलर है. और अगर ये टूर्नामेंट प्रोग्रेस करते गया और यू सी द विकेट्स टर्निंग, दिस गाय इज गोना कॉज प्रॉब्लम्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. मैं तो बोल रहा हूँ 4 स्पिनर को खिलाओ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी. अगेन विकेट देखना पड़ेगा, मगर अभी जो हिसाब से दिख रहे पिचेस, दे आर स्लो, दे कंड्यूसिव टू टर्न. सो these 4 spinners in Afghanistan are going to be deadly. Which teams do you think will finish in top 8 for Champions Trophy qualification between England, Bangladesh, Netherlands, Sri Lanka? So I have to pick 2 out of the 4, right? Ooh, it's a tough call, man. It's a tough call. I'll still go England and Sri Lanka, even England are at the bottom, but I'll just go with that. But yeah, it's a tough one. Afghanistan playing Australia and South Africa. Do you think they will beat them? They might lose one game, but everyone is saying, look, I think they might win one game. They might lose to Australia and beat South Africa. That's just my prediction. But
they can beat both of them, they can lose to both of them as well. Just the way they're playing, man, they're very dangerous. And just और spin conducive हो रहे conditions उन लोग और खतरनाक होने वाले हैं. Against Australia, it's going to be tough. It's going to be difficult because Australia are also looking, to qualify. They've also played some good cricket. South Africa, ke khilaf, I think South Africa might be qualified by then. I don't know what their mindset will be and everything. And we've seen them already lose to Netherlands. It could be tricky if they're chasing South Africa against this spin attack. I don't know. I think South Africa can be put under pressure. So, वैसा है. But I think definitely they have a chance of winning one game. But yeah, Afghanistan are looking really good, man. And like I said, captain बहुत mature है उन्हें with the field and bowling changes, but also with the bat, he's taking the responsibility. जो middle order उनको improve हुआ, that's the game changer for Afghanistan in this tournament. Azmat, Umar Zai, Hazmatullah Shahidi and Rahmat Shah. ये जो तीन batters है 3, 4, 5, they've improved this team and taken them to another level. इसलिए they're competing and beating big teams. This is the reason, because their batting has become solid. You saw that again that Pakistan game. अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी आप देखें, उन लोग जो है ये जो बैटर्स मिडिल ऑर्डर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे, जो रन बना रहे, they are the game changer for Afghanistan in this tournament. Nepal and Oman qualified for 2024 T20 World Cup. 18 teams have qualified. Only 2 spots left from African region. Yes, I did see that. Oman is a very good team that I really like. In terms of the associates, that's one of my favorite teams. I like the way they play their cricket. They've done well in the last 4 or 5 years. Unfortunately, they haven't made it, but in tournaments before. But I really enjoyed the way Oman play. There's going to be a lot of teams, man, in that World Cup. It's going to be crazy. Tomorrow, Pakistan, New Zealand. Your thoughts? Like I mentioned, I think it's going to be a cracker of a game. I'm thinking, should I just start the car and drive down to Bangalore right now? I'll reach there like maybe 5 a.m. and then think. But yeah, I think it's going to be a cracker of a match. New Zealand are hit with injuries. They're also थोड़ा सा downward spiral है उनके लिए. It's बहुत important match है, as much as it is for Pakistan. Pakistan, on the other hand, this is what they love doing. The corner tigers coming in. The players are coming into form. Even जो मैच साउथ अफ्रीका से हारे, आप उसमें देखे उनके बॉलर्स वापस आ रहे थे फॉर्म में. इवन उनकी जो बैटिंग शादाब उन लोग करे एंड में, वो भी अच्छा था. और फिर बांग्लादेश के खिलाफ फखर जमान जो बैटिंग करा, he can be the game changer tomorrow. If it's a flat deck, Fakhar Zaman will be the guy. Even if there is something in it for the bowlers, which we saw in England Sri Lanka game, Fakhar Zaman could be a deadly player tomorrow. If he gets going, because it's a small ground, sixes are on offer, and he's one of the few Pakistani players. Him and Chachu are, I think, the most important in this ground, because look, chakka they can hit by ease. And if he was there in that Australia game, I think Pakistan had a much better chance winning. You said 360, 370, but on that particular track against Australia, that was chaseable, that score. But you needed someone who had a 6 hitting ability, and they only had Chachu game mein. So Fakhar Zaman could be the game changer. Wasim Jr. जो bowling कर रहा भाई, he's been outstanding in the last couple of games. Line length has been really good. He's bowling at 140 clicks also. Hassan Ali तो 130 135 आ रहा था, उसको कई को खिला रहे थे. ठीक है, जो भी हुआ, मगर Wasim Jr. he's improved also. I think Asia Cup में I saw Wasim Jr. he wasn't that impressive as he is right now. He's hitting the right lines and lengths. His pace is good as well. Getting the ball to move, I've been very impressed with him. Shaheen also in the last game bowled really well against Bangladesh. So their fast bowlers are getting into rhythm. अब Haris Rauf का बारी है to come up, pick up wickets, put pressure on New Zealand. तो देखना पड़ेगा कि कैसा रहेगा. But yeah, my thoughts are Pakistan will win this game in my opinion, but it won't be easy. New Zealand, even if they have 10 injuries, bro, they come back. They know how to play as a unit. They, like, even the new players who come in, they play to a particular method, particular game plan. They have a specific role. भाई आपको इतना करना है, उन लोग करके दिखा देते. तो it won't be easy. And if Chapman plays tomorrow, man, watch out for him. I don't know. He didn't play in the last couple of games, but I hope to see Chapman. I think उन्हें जबरदस्त finisher है. Tomorrow, Pakistan versus New Zealand is being played on reused pitch from England Sri Lanka match is in the game. Okay, so then if it's that pitch, then game on, and that is where Mitchell Satner will come to play. And Pakistan spinners they have not done well in this tournament. Now Usama Mir has to come to the party. I don't know if Nawaz is going to play or Salman Agha is going to play, but they have to come to the party. Maybe play 3 spinners if they have to. Iftikhar will also have a role with the ball. So if it is that England versus Sri Lanka pitch, then of course it will be a dry surface. Batting first will probably be the best option, and then put pressure on the opposition in the second innings. वैसी होगा मेरे हिसाब से. So yeah, if it's that surface, then it will be a bit tricky, and that's where the spinners will have to play a role. Santner has been bowling beautifully. Glenn Phillips has done well as well, but I think they're missing someone like Aish Sodhi. New Zealand is attacking option, leg spinner, gets the ball to rip. तो वैसा player मेरे हिसाब से they are missing.
how good has he's been outstanding with the ball, Phillips. Even वो जो मैच में 390 मारे थे ऑस्ट्रेलिया, उसमें उसके फिगर्स देख लो. आई थिंक 30-35 रन ही खाया उन्हें 10 ओवर में. His economy was like 3 something or 4 something, if I'm not wrong. He's been outstanding with the ball. He's done a marvelous job, and that is the great thing about New Zealand. They get players in, and when they need to use them for a specific role, they understand that role and they chip in. I don't know kaisa karte, they're like robots, but they do a fantastic job. He's been outstanding with the ball, and so has Santner. He's been really good, man. Santner is a very underrated bowler. He flights it nicely too. It's not Kali darting. He flights it very well. Very smart, sharp bowler. Under MS Dhoni also, he's bowled really well. But Santner in general is a very underrated bowler. But yeah, Glenn Phillips being a part-time, him, Rachin Ravindra have done a really good job in this tournament. Rachin Ravindra, man, with the bat, he's been outstanding. ठीक है, last game में नहीं performance किया, but he's been the player of the tournament in some books, because कोई किसी को मालूम नहीं कौन है ये बच्चा क्या है. राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के नाम पे नाम डाल दिया उसका, और मगर जो बैटिंग कर रहा उन्हें, ओ हो बेहतरीन क्रिकेटर है. ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर. He's very young. This is his first major tournament and he's been killing it. Latham has underperformed, and that is surprising because he does like playing in Indian pitches. A very good player of spin. Maybe it's the responsibility of captaincy, putting some pressure on him. Maybe that's affecting his batting. But yes, he has underperformed to his expectations. But Sachin Ravindra has overshadowed that, and he's covered that crack because he's batted so well. Also Conway, I think, I expect more from him. He's not converted those scores into big hundreds like he does in the IPL. So Conway se bhi meko runs dekhna padega, and of course they're missing Kane Williamson. Will Young is a decent player, but Williamson being in that 11, playing one down, Rachin Ravindra opening, I think that is New Zealand's team, and they're going to miss Ferguson too if he doesn't play. Ferguson, Henry have been outstanding in this tournament. If both of them or one of them don't play, it can affect New Zealand. I know Jameson's coming in. He's a very good bowler too, and he can do the job too. लंबा हाइट है उसका, अच्छा सा लेंथ मारता है, उन्हें बाउंस भी मिलती है उसको. मगर वही है कि उन्हें खेला नहीं अभी 4-5 मैचेस, तो देखना पड़ेगा कैसा रिदम में. I think he was with the reserves anyway, but they've gotten him into the team, and he might be in the playing 11 as well, depending on the fitness of the other bowlers. And that is a problem New Zealand के लिए भाई. Injuries has really taken a toll on the team. Yeah, but I think tomorrow, if that's the surface, the spinners का बहुत important role रहेगा. कल बहुत ज़्यादा important रहेगा. पाकिस्तान के spinners have underperformed, बहुत बेकार डाल रहे थे, तो उनको वापस आना जरूरी है, performance देना जरूरी है, wickets लेना जरूरी है उन लोगों को. तो देखना पड़ेगा क्या होगा वो मैच में. And then we have that England Australia match as well. I don't know if Australia can get knocked out, but they will have to win at least one game to assure a qualification, I think. If there is a way. I mean, Ibrahim Bhai is our calculator, he can tell us, but I don't know what Australia's scenario is for the semi-finals exactly. New Zealand, though, if they lose the last two games, अगर पाकिस्तान से हार गए और श्रीलंका से हार गए तो उन लोग आउट हो जाते हैं. और अफगानिस्तान अगर एक मैच हारे, then Pakistan will go through if they beat England. तो वैसा है. It's right now very complicated, very confused. Anything can happen. There's going to be drama going into this top 4. India is the only team qualified right now. If South Africa beat India, then they'll also probably qualify. Lekin apart from that, it's all to play for. The court is open. Can Bobby make the difference tomorrow? I mean, it's about time, isn't it? Like, he scored runs in this tournament, 50, 60, मगर they've not been effective runs. Effective in the sense कि 50 मार लिया उन्हें कितने 60-70 बॉल में. It's not impacted the game. It's not taken like to game, like, भाई match changing है. He's changed it around. Like Shreyas Iyer की inning yesterday, like, the way he was batting, or even the way Chachu bats, Fakhar Zaman, the way he batted in the last game. अगर आप Pakistan खाली you compare player to player comparison, Babar has not scored those runs. Even Rizwan has in one game against Sri Lanka, but Babar has not scored those runs. He's a class player. He's just in a very bad rut right now, and I think it's about time that Bobby makes a difference, man. Otherwise, he's going to be going under the hammer on a lot of YouTube channels and a lot of public domains in a lot of sports channels in Pakistan too. They're ready to axe him right now, but still alive. He's still surviving. Let's see tomorrow if they win, then they fight. They live to fight another day. So देखना पड़ेगा क्या रहेगा वो. But I think that pretty much wraps it up. Kal milenge double header kal, so make sure you get some good rest, and everybody take care of yourselves and relax. Hit the like button, subscribe button. Enjoy the rest of the weekend. We will be with you tomorrow and Sunday for the big one in Calcutta too. Take care, everyone. Thank you so much for joining. Make sure you hit the like button, subscribe button, and follow Chasing the Target on all the socials. Thank you, everyone. Have a good rest of the night.